जी यस जी। आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जब पलाश का 18th बर्थडे था तब उसको मैंने फ़ोन किया था। उस वक्त दुबई में था अपनी फैमिली के साथ। सो आई प्रॉमिस्ड हिम अ सॉन्ग एंड दैट टाइम वी हैड सेलेक्टेड दैट सॉन्ग तू ही है आशिकी। That was my birthday gift to him on his 18th birthday. And now 4 years now. It's been 4 years. 4 years later, he's been doing such amazing work. So, and in a way, I feel good that I kind of been working with him now since 4 years, and I hope that he can record another song for me soon. ऐसे कौन सी क्वालिटी है पलाश जी की जो आपको सबसे अच्छी लगती मुझे कोई क्वालिटी नहीं अच्छी लगती। मुझे सिर्फ इसकी गाने की क्वालिटी अच्छी लगती है। No, he's a lovely, he's a very hard-working guy. I think on an average, I get a message from him once every week with a new tune at 3 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning, 5 o'clock in the morning. So this guy is always at it. You give him an idea and he will work out a song and call you back in 2 days. है? So is there any special thing you have planned for पलाश? Uh, yeah, I'm gonna sing his favorite song so he doesn't remain his favorite song anymore. पॉजिटिव क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि क्लीनिनेस के ऊपर है। किसके ऊपर? क्लीनिनेस हाँ, स्वच्छ भारत जी। वर्षों में से 5 मिलियन ट्रैश हटाया गया है एक साल के ऊपर, जी। इसके लिए बहुत लोगों ने प्रेस किया है, तो आप इस इनिशिएटिव को किस तरह से सपोर्ट करते हैं? आई थिंक 100% सपोर्ट करता हूँ। इनफैक्ट हालांकि मैंने सुना कि यहाँ लोखंडवाला के आसपास एक पब्लिक फ्रिज भी लगा है where people who need food, unfortunately they can just go open the fridge and pick up food. So just this evening I had somebody sent across from my house and actually put some food there. I think there's social awareness has come around a long way, and I think we keep talking about the negative impact of social media, but there's also a very positive impact. So it depends on our mindset. So फिलहाल तो मुझे I look at everything positively. So I think it's a great initiative, and we need lots more like this in this country. But it's great. Yeah, I think it's a great initiative for sure. किस क्या? So वो तो for me it'll always be Salman. I'm a big Salman fan. So yeah, but I think what Bahubali 2 has done is redefined business. I think for all of us. So it's great, and I'm pretty sure after 1 year some other film will come along, and then that will redefine business, and so on and so forth. That's how we grow. सर वो मतलब I will hope कि ट्यूबलाइट उसका रिकॉर्ड तोड़े, फिर उसके बाद कोई और ट्यूबलाइट का रिकॉर्ड तोड़े, एंड देन सलमान भाई ब्रेक्स येट अनदर रिकॉर्ड, एंड दैट गोज ऑन. यार मुझे आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस मैच. मैच हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो फिर होना चाहिए. सर आई थिंक इसमें मेरा डिसीजन कम है. आई थिंक द क्रिकेटर्स the government has decided and they've decided to do it. So I'm sure they've thought a lot about it. जितना सोच मेरे को तो अभी पता चला है कि मैच हो रहा है, तो काफ़ी महीनों से सोच रहे होंगे, उन्होंने कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया होगा. So I'll definitely abide by the decision. Yep. Thank you.